Okay. So I will have to run this once more. दोबारा से रन करने की क्या जरूरत रहता है? Because the session ends. जब हम शट डाउन किए थे ना सिस्टम, ओके। और ये पर्टिकुलर जो कर्नल है, ये दिस कर्नल डाइड, मतलब दिस कर्नल, इसका जो ये शट डाउन हुआ था, राइट? But there is तो a ऐसे so every वैसे the variable which is the RAM is lost. ओके, तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोसीजर है कि शटडाउन में कोई कर्नल हमने ऑफ नहीं करना हो, वो ऑन नहीं, रहे? मेरे पास तो नहीं, I don't know of that yet. ओके। So what can be done is that we can save its state into some file and load that file when we start running. But I have not come across such a scenario. ओके। So this we have already seen. So there is one. Okay, let me get these. Credit score and age. We are trying to analyze credit score with age. And then this we had seen. This we had seen. Okay. Let us run this also. So we have what was the credit score age? Right. So what is the correlation between the credit score and age? What is correlation? First of all, So क्या चीज? correlation Between this credit score and age. credit score और age. मतलब कि कितना क्रेडिट स्कोर और एज में रिलेशन ये हो गया What is correlation? कोरिलेट करना है. जितनी कम एज होगी उतना उतना ही उस बंदे का क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, एंड जितनी एज ज्यादा होगी पर्सन की उसका उतना कम होगा. वो क्वेश्चन नहीं. The question is, what do you mean by correlation? So I am writing it here. That describe the size and direction of relationship between two variables, right? So here we have these two variables, credit score and age. Okay. Now what is the relationship between these two variables? Directly proportional or inversely proportional?
right? Statistical measure which is expressed as a number that describes the size and directionship of a relationship. Size of relationship का मतलब if age increases, credit score increases in what ratio, or in what proportion credit score also increases, right? कम सर एक बार रिपीट increase होता है या ज्यादा increase होता है? समझ नहीं आ रहा सर थोड़ा सा हाँ पता है, that is why I am explaining. ये ऊपर से आ रहा है पूरा सुनो 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 ध्यान से सुनो, ठीक है? See, if you see that take for example force F is equal to ma, we have studied in physics, है ना? Force is equal to mass into acceleration. Right? So यस सर how did we derive this? सर किसको ड्राइव करना है f इक्वल टू m को Now, how did we do this? How did we reach to this conclusion that F equal to m into a, मास or the force? मतलब कि इसमें हो गया ना कि कितना मास है बॉडी का एंड देन एक्सीलरेशन मतलब कि उसमें पता लग जाएगा कि एक टाइम पे बॉडी कितना एक्सीलरेट कर सकती Gravitational है force G m1 इनवर्सली by r square. This formula we have studied, है ना? G mass 1 mass 2 by r square. This we have studied, ना? और पावर क्या Gravitational force के लिए mg कैसे इसमें gravity. This is g G gravitational constant है ना G. नहीं ये fg इक्वल टू g अरे ये इसमें सबस्क्रिप्ट नहीं लिख सकते ना जुपिटर में, अच्छा ठीक है ठीक है? F और G इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, ठीक है ठीक है? तो how did we derive this? We did a lot of experiments, right? And those experiments suggested us that if A increases, F also increases, Directly proportional. right? And if M increases, having A constant, F also increases, right? Or A is equal to F by M, whatever. And this is just a vague example. So this is the relationship, size of relationship between two or more variables, right? This G, this constant, is some size of relationship, right? These are all variables, but this G is a constant, right? Such kind of constant, they tell us the size of relationship, right? Or if it is increasing or decreasing, right? Like for example, for distance r, force will be decreasing. But what is the size of direction of relationship is opposite, right? Makes sense? There are two things, size and direction of a relationship. In the whole of data science, we need to find these two things. How A depends on B, and in what I mean, in what size, right? How much, how A depends on B and how much A depends on B, right? So correlation is a statistical measure for it. सर एक बार रिपीट कर देना प्लीज Correlation क्या है?
relationship between two or more variables. ठीक है? Now these are two variables, rate score and age. Just for example, I have taken. And how this variable depends on this variable or vice versa. So the interdependence between these two variables has a size. How much do they depend on each other? If they depend very less, the size will be small, right? For example, if a small change in variable A gives a very large change in variable B, then it means that it depends, the size of dependence is more, right? And if A increases, B also increases, then direction is positive. If A increases, then B decreases, in that case, direction is negative. Proportional, if in case things are proportional to each other, then we can say direction is positive. Yes, there are. Abhi, you will understand, Raghav. Don't worry about it. Try to see. I will give you more description about correlation. Okay. First thing is the values are between -1 to 1. Okay. Values of the correlation coefficient. So there is a correlation coefficient. Okay. So this value, the value of this correlation coefficient is between -1 to 1. If it is 1, right? 1, it means it is what? Perfect positive correlation. ठीक है? Does it make sense to you? If one is positive, then it means perfect positive correlation. Perfect positive correlation means if A increases, B also increases. ठीक है? Perfect का मतलब ये 1, right? It does not mean that it will increase in the same proportion. But if A increases, B definitely increases. Take. If it is 0.9, then we say that it is high positive correlation. ठीक है? If 0.5 के आसपास है, then we say that it is low positive correlation. सर हम ऐसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि ये हाई है, लो है या परफेक्ट है? रेंज -1 से कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टीज बता रहे हैं. -1 से 1 तक. -1 से 1 के बीच होता है ये वैल्यू. ओके. ठीक. तो ये मतलब कि पर्टिकुलर ये डिफाइंड है. हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का मेथड होता है. ठीक. दैट वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड. वो इसके बाद डिस्कस करेंगे. पहले लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन. ठीक है? I gave you some example. ठीक. Now we have to calculate correlation coefficient. Before calculating that, before telling you how to calculate correlation coefficient, I am discussing what is the range of values it has and what do they mean. इसके बाद I will tell you how to calculate correlation
coefficient. ठीक है? After this, you will be able to understand correlation. Okay. ओके ओके सर। ठीक है, ये 4-5 स्टेप पूरा नहीं होगा तो फिर बीच में समझ में नहीं कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ से वहां सीधा, एक बार हम आई कैन ट्रांसफर नॉलेज डायरेक्टली। ठीक, 1 by 1 you will understand. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, if it is 0 then we say there is no correlation, right? If it is minus 0.5 then we say it is low negative correlation. Okay, if it is minus 0, if it is in the range of minus 0.9, we say it that as high negative correlation. Okay, if it is minus 1 then it is perfect negative correlation. ठीक है? Yes, sir. This is okay, right? There is something called a correlation coefficient which tells us about these two things, size and direction, right? This is the size, right? And the direction, positive or negative, whatever it is. Okay. So I will give you an example. In Pandas, we have one function which is called CORR, which finds out the correlation, right? So there is a definite algorithm to find the correlation between two variables, which today I am not discussing, but in next class I will discuss it in detail. Right? ठीक है। So because I thought that this would have already been understood. Okay, कोई बात नहीं. So for this we just need to do so we see that credit score and credit score 1, obviously, right? Makes sense? Credit score with credit score is 1 because they both are same variables. है ना? What is the correlation of A with A? Same. It will be 1. Perfect. Yes. Positive correlation. Makes sense? Yes. Age and age. Perfect positive correlation. What is this? Credit score with age. Minus 0.003965. Where does it lie? No correlation. No, you will say it is near to 0, so it is no correlation. है ना? Okay. तो मतलब इसका ऐसे एक चीज कहना कुछ बोलूँ मैं? हाँ बोलो। इसमें हमको देखो ये तो आ गया हमारे पास रिजल्ट, बट हम इसमें एनालाइजेशन कैसे करेंगे कि ये सही है या ये ऐसे है, कुछ भी ये तो एनालाइज कंप्यूटर कर रहा है ना कि कोरिलेट करके उनको बता रहा है। तो हमारे लिए जब रियल टाइम में रियल वर्ल्ड में काम करना हो तो उसमें कैसे हम कर सकते हैं? क्या मतलब कि रियल टाइम पे जब हमें रियल वर्ल्ड में काम करना हो प्रोजेक्ट, उसमें कैसे इसको हम समझ सकते हैं अपने लिए, कंप्यूटर के लिए नहीं, खुद? रियल वर्ल्ड में काम, ये तो रियल डेटा ही तो है हमारे पास। दिस डेटा सेट इज फ्रॉम सम बैंक ना। हाँ सब वो तो मतलब मेरे को एक चीज बस ये चीज पता नहीं लग रहा है कि इसको हम रियल वर्ल्ड में कहाँ पर यूज करेंगे, मतलब कैसे यूज करेंगे? रियल वर्ल्ड तुम्हारे लिए क्या है पहले ये बताओ।
रियल वर्ड का मतलब कि जैसे हमने कोरिलेशन निकाला तो मतलब कि आपने कहा ना दो के बीच में कोरिलेशन निकलता है, दो हाँ, वेरिएबल्स की वैल्यूज के बीच में, हम्म, ये हमने कोरिलेशन निकाल दिया, लेकिन इसका निकालने का मीनिंग क्या है? क्या लग रहा है तुमको? क्रेडिट स्कोर एज के साथ, व्हाट डू यू नो व्हाट क्रेडिट स्कोर इज? नो। अच्छा, क्रेडिट स्कोर, विवेक सर, यू नो व्हाट क्रेडिट स्कोर इज? हाँ जी सर। You please explain to. On the credit score is a kind of score, is not a kind of, it's actually a score जिसके बेसिस पे एक फिनेंशियल हेल्थ पता चलती है एक इंडिविजुअल की, सो दैट इफ इन केस आपको लोन वगैरह चाहिए हो तो बैंकिंग बॉडीज आपको लोन्स वगैरह दे सकें। इसके अलावा भी होता होगा सर, मुझे इतना नहीं पता है। क्रेडिट एक स्कोर विल बी रेंज राइट। तो greater than 730, 800, so that you can apply for the loans. And हाँ, banking authorities, it's global data. They can access your data on the basis of your PAN card. तो उस बेसिस पे आपको लोन्स वगैरह बैंकिंग बॉडीज या जो if you are बॉडीज paying your कैश EMIs on देती हैं। time, your credit score will increase. If you are paying your credit card bills on time, your credit score will improve. If you delay the payment, if the EMI misses, or if you delay the payment, then credit score will decrease. If someone has at least 750 credit score, then that person will easily get any kind of loan. Or if the credit score is lower, then banks don't. I mean, the Prefer interest the rate will person. be high. If the loan is given, the interest rate will be high, and it is possible that the person does not get the loan. ठीक है, यह होता है क्रेडिट स्कोर। So credit score अच्छा है, is higher. It means that the person is, that you can depend on the person, that the person will pay bills on time, that the person has sufficient money, right? Or has a fixed good source of income, so that he is able to maintain his credit score. Is that okay, Raghav? यस यस ये समझ में आया क्रेडिट स्कोर क्या है? Right, यस it यस। is calculate, it has a lot, it will, it takes into account the loans that you have and your credit cards and the loan ओके inquiries and multiple factors they take into account, ओके right? ठीक ठीक। So वो, why I tried to find out this correlation is that people with more age, I mean older people, maybe they will have more balanced financial system individually. Maybe their credit score is higher. I thought this, but as per the data, this is not the case. As per data, matlab what data we have, we see that why I chose these two. It is credit Hmm. score and age, because I initially thought that is it possible that credit score, I mean older people have better credit score? The answer is no. Hmm. The answer is that credit score is not at all related to age. No correlation. No correlation. So is it real world? Correct. As per the data, we can say it's the real world. Raghav, is it okay? यस सर। Hmm. चल लेकिन एक चीज और, हाँ, हम जैसे आपने अभी बोला ना कि इन दोनों का वैसे रिलेशन कोई नहीं है, एज और क्रेडिट स्कोर का कोई रिलेशन नहीं होता। क्या नहीं, यहाँ हाँ हम नहीं बोल रहे, डेटा बोल रहे हैं। हाँ डेटा, हाँ डेटा बोल रहा है कि क्रेडिट स्कोर और इसका रिलेशन नहीं है, तो हमने अगर रिलेशन एनालाइज करने के लिए निकाला ना इसको कि ये हाँ, होता है, I had an hypothesis that credit score increases with age. और हमको ये पता कैसे चला कि इन दोनों का रिलेशन नहीं है? Based on experience, anecdotal मतलब कि मैं evidences. अगर फ्रेशर हूँ तो मेरे को अगर देखना हो तो मैं किस टाइप से मैं देखूँ, मेरे को पता एनालाइज हो जाए।
क्या? मतलब कि अगर मैं किस टाइप से, मेरे पास डेटा है तो मेरे को एनालाइज करना है कि ये इनका रिलेशन कुछ नहीं है, तो मैं किस टाइप से एनालाइज कर सकता हूँ? अब इसमें ज्योग्राफी तो नहीं है, ज्योग्राफी तो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अब तुम्हें अगर एज और टेन्योर में देखना हो, राइट, हम्म, एज और अकाउंट का बैलेंस में चेक करना हो, राइट, हम्म। तो यू कैन चेक। एक हम सर एक बार वो कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर और बैलेंस में चेक कर सकते हैं एज के छोड़ के? ठीक है, वो एग्जांपल लेके देखेंगे। गुड। तो एक ये उठाओ, जैसे कॉपी करते हैं कोड। स्कोर एज नहीं चाहिए, और बैलेंस ना, यस यस। ये भी नहीं है। मतलब कि जो जीरो के नीचे होगा जीरो के उसका नीचे मतलब? मतलब जैसे जो आपने ऊपर दिखाया था कि हाँ नॉन क्रेडिट आप बताया था, जो जीरो पे होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको मतलब कि कुछ भी नहीं है। ये जीरो के नजदीक है ना, मतलब कोई रिलेशन नहीं है उन दोनों कोई वेरिएबल्स में। रिलेशन नहीं है, ठीक है समझ गया। ये पता करने के लिए इफ वी कैन derive what how can we derive insights from the data set we have। ओके ओके। ठीक है, यस। तो ये फाइंडिंग आउट द कोरिलेशन इज वन ऑफ द वेज ऑफ showing it। ठीक है, सो बैलेंस और क्रेडिट स्कोर के बीच में, उसके बीच में तो होता रिलेशन आई थिंक सो। ये नहीं आया ना, देखो ना, 0.006268 आया ना। ठीक है, okay, so we are ending at here today. In the next session, bring your doubts on the Saturday session, we will discuss about it। तो सैटरडे कितने बजे सेशन रहेगा? कोई 7:30 रख सकते हैं। मॉर्निंग, शाम में। सर एक चीज और पूछती थी, जैसे हम जुपिटर जो यूज करते हैं, ये जिसमें इसका कंपाइलर गलत एरर्स प्रोवाइड करता है, क्या? इनकी मैं एनएलपी में यूज कर रहा हूँ ना, तो एनएलपी में ये क्या कर रहा है कि अगर मैं उसी उसी कोड को पहले रन कर रहा हूँ जुपिटर में, तो वो रन हो रहा है, सब कुछ आराम स्मूथली चल रहा है, बट मैं उसको बंद करके, जैसे मैंने कल ओपन किया, देन मैं अगर आज फिर कंटिन्यू वही कोड रन करूंगा तो वो मेरे को एरर दे रहा है, कि बोल रहा है कि ये चीज आपने प्रिंट इन, और एरर भी अननेसेसरी एरर बता रहा है, अननेसेसरी बता रहा है ना। अननेसेसरी बता रहा है, और रन भी जो कर रहा है ना कोड, तो वो हम्म, भी पहले ठीक कर रहा है, बाद में जब सेकंड टाइम फिर रन कर रहा हूँ तो वो कुछ अलग ही मतलब की रिप्रेजेंटेशन आ रही है, कुछ समझ ही नहीं, पहले ठीक कर रहा है, अरे वो पहले समझ में पैराग्राफ। आएगा, सुनो, कहीं देखो, इन्वायरमेंट इज द बोथ द इन्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। ओके। ठीक है, पहले तो check the environment, if in which environment you are running on Jupyter and which environment you are running on your other एनाकोंडा। code editor। ठीक, वो फाइल्स एक्सेसिबल जो चाहिए उसको वो है या नहीं, वो लाइब्रेरीज उस environment में इंस्टॉल्ड है या नहीं, check these things। नहीं सर, उसी मतलब जैसे मैंने फोल्डर बनाया, मैं एनाकोंडा में जुपिटर यूज करता हूँ, वहाँ पर फोल्डर बना उसका एनएलपी का, उसी में मैं काम करता हूँ, उसी में सब कुछ मैंने एनएलटी के जो भी उसकी लाइब्रेरी होती है वो इम्पोर्ट की है सारी, इसको बट वो। डिस्कस कर लेंगे उसमें डाउट सेशन ओके कल। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू, चलिए सर, सही है, ओके, थैंक्स, बाय। बाय बाय।